In this video, I will share with you two core principles about proximity and two implementable actions that you can take in your life to change the kind of people that you spend time with. The first principle about proximity, ये आपने शायद सुना होगा. You are an average of the 5 people that you spend most time with. What does it mean? Let's talk about it. जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप इवन, and definitely your finances and what you achieve becomes an average of it. I'm not talking about your family members, immediate family members, but actually people that you spend time with, your friends, stuff that they do. Let's take a look at कि ऐसा होता क्यों है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उनकी बातें हैं, जो उनका स्टैंडर्ड है लाइफ में, जो सोच के वो खुश होते हैं और जिस चीज से वो परेशान होते हैं, वो सब आपसे शेयर करते हैं. एंड कहीं पे भी व्हेन वी हैव अ रिलेशनशिप विद एनीबडी, वी टेंड टू हार्मोनाइज. जो उनकी एनर्जी लेवल रहता है और जो हमारी एनर्जी लेवल रहता है, इट विल कम डाउन और इट विल गो अप, बट इट टेंड टू हार्मोनाइज एट अ सर्टेन लेवल. सो जो हमारा वाइब है वो सेम हो जाता है. व्हाट इट मीन्स इज कि हम लोग वही शायद एक्शन लेंगे या सिमिलर एक्शन लेंगे जो वो लेंगे. हम लोग उन्हीं लिमिट से जूझेंगे जिससे वो लोग जूझते हैं. एंड इवेंचुअली आवर लाइफ बाय एंड लार्ज विल बिकम एन एवरेज of those 5 people. That's the first principle. And that principle must tell you that you need to be careful about who you spend most time with. And that actually in today's world, in the COVID world, also includes social media and news. What do you watch on television? If you're spending time watching news all the time when there's a political debate going on, or जहां पे ये चल रहा है कि किस में क्या गड़बड़ है, इसने ये गलत किया, इसने वो गलत किया, यहाँ पे इतने मर्डर हो रहे हैं, all of those things, that'll become a reality of your life, and it will cause subtle changes to your mindset about how you think your day-to-day stuff. That's the first principle. Second principle is that when you do decide to look at your proximity, there are 3 core components that you must keep in mind. Number 1, 33% time you should spend with people who you can learn from. These are the people, maybe people you follow on social media. Maybe these are friends or elders who have a lot of wisdom to share with you. They are not smarter than you, but they definitely have experienced life more than you, and they can share those things. That's one. Second, set of people जो आपके साथ में हैं, 33% people जो लोग आपके साथ के हैं, जिनका आपसे वाइब मिलता है, जो लोग आपके जैसी बातें करते हैं, जो लोग आपको समझ सकते हैं, इनके साथ में आप अपने आइडियाज वैलिडेट कर सकते हैं जो आप सीख रहे हैं, और आप उनको भी कुछ सिखा सकते हैं. थर्ड, रिमेनिंग पीपल आर द पीपल दैट यू पुल अप, एंड इट्स ऑब्वियसली 34% बिकॉज यू ऑलवेज नीड टू कंट्रीब्यूट मोर देन यू टेक, सो इट्स जस्ट फॉर 1%. बट दीज द पीपल जिनको आप अपनी तरफ से पुल कर रहे हो, जिनको आप हेल्प कर रहे हो. मैंने अभी तक 300 लोगों को कोच किया होगा, एंड आई कैन टेल यू लिटरली एवरी सिंगल टाइम इन दोज हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स देयर हैज नेवर बीन अ सिंगल टाइम जब मैंने कुछ ना सीखा हो. सो इन अ वे, इवन व्हेन आई एम पुलिंग देयर हैंड्स, आई एम पुलिंग देम अप, आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम देम. सो ये तो वो 2 प्रिंसिपल हैं जो कि आपको दिमाग में रखने हैं when you're looking at proximity as a whole, and both of those are the underlying basis जिसके ऊपर आप एक powerful life build कर सकते हो. Now there are 2 actions, implementable actions that you can take which will ensure that you actually develop proximity. Because मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये ज्ञान की बात होकर रह जाए, जहां पे जो है आप बोलो ठीक है बहुत ज्ञान मिल गया हमको, अब हम इसको implement कैसे करें, because this becomes one of the challenges. So, the number 1 thing that you have to do is, how do you find these people? Like, the way to find these people is to join focus groups. Online में ढूंढो, अपने ऑफिस में ढूंढो, अपने दोस्तों में ढूंढो, like अपने क्रिकेट टीम के साथ में ढूंढो, जो भी आप स्पोर्ट्स फॉलो करते हो उसमें ढूंढो. Join focus group. Find people who have done certain things that you want to do.
Join various groups or join various programs. Even if you have to pay for it, pay for it. A lot of my current proximity and my current friends as a coach, I found from these kind of programs because we are on the same journey. We have the same vibe. We believe in the same values. So it's quite easy for me to find those people there. So join this focus group, invest your time, invest your energy into that, build connects with those people. That's one thing you could do. Now, I know कि हर आदमी एक प्रोग्राम नहीं खरीद सकता या हर आदमी एक फोकस ग्रुप नहीं ढूंढ सकता, लेकिन जो भी आप ढूंढ सकते हो स्टार्ट उससे करो. इतना प्लान करने की उसे ओवर एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है. जस्ट फाइंड अ स्मॉल सेट ऑफ पीपल दैट यू कैन जॉइन. दैट्स वन थिंग यू डू. Second thing you have to do is in your workspace, take one initiative. एक कोई भी initiative लो which is outside your normal scope of work. Like to give you an example, मेरा एक client था जो कि in a large company he was in a senior leadership position, but he was really very narrowly focused on his work and work was starting to become very boring for him. मैंने उसको सजेस्ट किया कि यही सेम चीज, find a focus group, find some place, and then I also suggested that take an initiative, and he brought all of these things together and he took an initiative. He put his hands up for actually becoming a diversity champion in the particular region. Now जब उसने ये किया था तो उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उससे क्या होगा, लेकिन क्या हुआ जब उसने इनिशिएटिव चालू किया. So as a result of that initiative, there are other senior vice president and very senior people who actually were on top of that initiatives, like all of these big initiatives. So he started interacting with them and he built up some kind of a relationship. Now that's the thing. You don't do this for sake of it, but you do it because you like that thing. Like he loved the entire idea of diversity. उन discussion के लिए preparation used to be very different from the typical corporate presentation. उन discussion के लिए जो वो present करता था वो भी बिल्कुल तरीका अलग था. And the way he connected with those people was more as a person than anything else. And you can bet that one thing had a huge impact on his career, on his mindset, and on every single part of his life because the new ideas coming in, his proximity went up. So मेरा लास्ट मैसेज ये रहेगा कि कोई भी चीज आपको एक पावरफुल लाइफ बिल्ड करने से रोक नहीं सकती, लेकिन आपका जो एनवायरनमेंट है जिसमें आप रह रहे हो, जिसमें आप सुन रहे हो, देख रहे हो, उसका बहुत इंपैक्ट होता है. वॉच आउट हु यू स्पेंड टाइम विद. बी अ गार्ड टू योर माइंडसेट.